Okay, so Mala, could you tell me what did you learn in the last class? Sir, I can't listen your question. Yeah, could you tell me what did you learn in the last class? We have learned about present continuous tense. Mm-hmm. Yeah, and so what do we use it for? Yes, and I think there were two more auxiliary verbs as well that we use for some specific purpose, I would say. Yes, Uh, Mala. s- sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. Okay, sir. I'm saying that we have learned about present continuous tense, and then we have started about the affirmative and negative and Mm-hmm. uh, interrogative questions. And then we have learned about that when we use right now, these days, and what's on. Okay, okay, yeah, great. So we will be, however, recording all of the previous lecture that you learned from Ma'am Afshan. Okay. Yes, Iqbal Saab, Banafsha Mohammadi, how are you doing? Sir, Alhamdulillah, fine. Okay, great. Are you okay, And sir? Alhamdulillah, I'm doing great. I'm doing great along with all of your prayers. Thanks, So, sir. yes, so do you recall anything from the last lecture, Iqbal Saab? Uh, last lecture, sir, name Akshay? Yeah, yeah, the one Ma'am Afsha gave. Mm-hmm. Hmm. So, could you recall anything from that? Uh, yes, sir. I Mm-hmm. just a minute. That was about the must or should use Mm-hmm. of Yeah, must and should. Yes, exactly. Good, good. and what is happening in present continuous tense Okay, great. And is an or mhm. helping verb with ing. Yeah, exactly. Great. For the continuous, for the continuation Yes, of action. Great. yes. And Banafsha Mohammadi, how are you doing? Assalamu alaikum, sir. Walaikum I'm assalam. How are good. you? How about you, sir? Okay, great, great. And were you present in the previous class that Ma'am Afsha Uh, taught? yes, but I was network problem, and end of Mm-hmm. class I not can join it. Okay, okay. Okay. However, we will record it a bit. There's a lot of background distraction in the background, Banafsha. Could you kindly go somewhere else? ये बैकग्राउंड में बड़ा शोर आ रहा है आपके. हाँ, sir. जी जी. So kindly try to minimize it. Okay. So okay, Okay, sir. without wasting a moment, I'll say we'll start the class. Manu, can you see the slide that I've shared? Okay. Yes, sir. Can you see the slide, everyone? Just give me a moment. Okay. So today the lecture is going to be about. Okay, great. The lecture is going to be about habitual actions. That is, we'll be using the present simple tense. This one I'd say is simpler compared to present continuous tense. Okay, so we mostly tell of our habits or what we actually do in our daily life, or daily basis, weekly or monthly basis. But before that, let's recall a bit about the previous lecture. There were actually two things that you learned. The first one was present continuous tense. You are actually in present continuous. You are telling about the actions happening in the moment. जो कुछ उसी वक्त आप कर रहे होते हैं या कोई भी काम हो रहा होता है आप उसके बारे में बता रहे हैं सही. एंड द सेकंड थिंग इज ऑब्लिगेशंस कि कौन सा काम करना आपके लिए जरूरी होता है
कौन सा काम आपको करना चाहिए या कौन सा काम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपके लिए, सही। सो दोज आर कॉल्ड ऑब्लिगेशन। लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर द प्रीवियस स्लाइड। तो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो पहले ये जरा पिछला वाला रिकॉल कर लेते हैं, सही। ओके, सो दिस वन वाज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि हम जो है ना सब्जेक्ट के साथ इज एम या आर लगाते हैं, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर आपके पास इफ यू आर गिवन आई, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, सही। ओके, तो आई अगर दिया होता है उसके साथ हम एम लगाते हैं। यू वी दे के साथ हम आर लगाते हैं, और ही शी इट या कोई भी नाम हो तो उसके साथ हम इज लगाते हैं along with helping verb, और सॉरी along with the action verb, main verb। and in main verb we use ing form, सही, ing form हम लगाते हैं। ओके, इन द क्वेश्चन हम यही करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स पहले डाल देते हैं, आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट, एंड एट द एंड वी यूज द मेन वर्ब ing फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, एंड along with that अच्छा हम इनको डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज करते हैं, सही। ओके, and the next thing that you learned was about obligations, things that are necessary to do or to give advice। तो इसमें आप या तो किसी को एडवाइस देते हैं, नसीहत जब करते हैं तब यूज करते हैं, या फिर किसी को आप जब कहते हैं कि काम करना आपके लिए जरूरी है, या ये काम करना या आपको जरूर किसी काम से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही। तो इसमें मेन चीज क्या है, जरूरी की है, जरूरत की है, सही। सो समथिंग जो कि आप क्या करते हैं, किसी को जब मशवरा दे रहे होते हैं तो उसके लिए आप लोग यूज करते हैं वर्ड शुड का, और उसका नेगेटिव क्या होता है, शुड नॉट होता है। लेकिन जब आप किसी को बता रहे होते हैं कि कौन सा काम ज्यादा जरूरी है, करना जरूरी है या उस काम से बचना जरूरी है, उसके लिए यू यूज द वर्ड मस्ट और मस्ट नॉट और मसंट। ओके, सो लेट्स गो टू द today's lecture। So, before moving on to the lecture, I'll ask you, all of you, about your daily habits. Okay, so let me unmute the mic. Yeah. So, in this, I'd say a bit of task, you have to tell about your daily positive habits. ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको पसंद होती है? What are those things that you do on daily basis that you love to do, that you think gives you some sort of positivity or brings positivity in your life? So I'll start the answer with you, Iqbal sir. Yes. So could you tell me about Yes, your daily yes, routine or something positive that you do on either a daily basis or weekly or monthly basis that you think can bring some positivity in your attitude or in your life? yes. Sir. So Mhm. to get up early in the morning for Fajr Yeah. prayer, and Mm-hmm. then taking breakfast, and after Uh-huh. that performing duty of picking and dropping of my children to school, their schools. Uh-huh. Good. Yes, and then at 11 p.m. At 11 a.m. I really used to go to my farm where Mm-hmm. I check the presence of the my laborers and advise something which is necessary to be taken at that time. At that time, and after Okay, okay. for 5 p.m. I return from my farm to my back home, and 1 hour it takes to returning home from that place Mm-hmm. to my back at home, and then I usually take lunch, Mm-hmm. sorry, Good. dinner, sorry, Mm-hmm. Okay. and after taking dinner and offering Maghrib prayer, then it's nowadays it happens to that the class time becomes near, and by hook or crook, as usual, as early as possible, I try to take my class, and then at 30 p.m. I take some break for few minutes, for 15 Mm-hmm. minutes, and then Okay. after Mm-hmm. praying, I again join the class, and at I hope that at 11 p.m. I go to bed, and this is usually, and at the weekend I try my best to use maximum
time for my family and my children at home. But at that day, I also used to go to my farm, and at the end of the month, I have a party with my laborers, particularly my labor working at the farm and the agriculture side. And then uh, this thing uh, mm, with every month in every year, the month of Ramadan is awaited for prayers, special prayer and special worships. And Okay. as usual, Eid and Eid al-Adha are celebrated with their family. Great, great. So that's such a positive routine, I'll say. Yeah, and that is, I think, quite a busy routine you have, busy Yes, habits yes, and positive yes, habits. Great, great. definitely. I Yeah. think that this is the life. Without Mhm. busyness, life is boring. Exactly, and I think if your life is not busy enough, because I've experienced it myself, you get quite much of depressed and you get anxiety as well. All of these mental Yes, disorders. Yeah. Okay, thank you very definitely. much, Iqbal Saab. Thank you. Yeah. Yeah. Coming at you, Mala Abbasi, could you tell us, inform us, or express your daily routine, your daily positive habits to us a bit? Okay, sir. Yeah. Sir, I get up early morning. I offer Mm-hmm. prayer, and after this, I have prepared my breakfast, Mm-hmm. and then also lunch for my kids, and then ready my child for school, and I also get for ready with them, and then Okay. we have to go at 7 o'clock, and then after this 8 o'clock we reach in our school, and then 8 to 1 30 I stay in school and take Mm-hmm. periods, and after this we return Mm-hmm. at least 2 o'clock, at I think so, to half past Uh-huh. 3, and Oh. then when I came back, then I prepare lunch for my family, and after cleaning and washing and do dishes, I take a rest like half an hour, and then send my child in mosque, and Mm-hmm. then uh, I wash the uniforms and dresses, and then prepare the next day uh, every domestic things for my child. And after, when they return back from the mosque, then I give them the tea and snacks, and then help them in doing the homework. And after this, Mm-hmm. I prepare the dinners when they have completed the homework, and then press the uniforms and what so on, everything's ready Mm-hmm. for next day, and then clean my kitchen, and then take r- rest at the Okay. I think so 10 o'clock or 10:30, Okay. Great, 11 great. o'clock, and Okay. then I Mm-hmm. make a call to my husband, and then after this we sleep. Okay, great, great. Thank you very much for informing us. Now, coming at you, Vinapsha Mohammadi, could you tell us a bit about your daily routine, daily schedule, or any positive habits that you do either on daily or weekly basis? Uh, After the praying morning, I'm going to the uh, morning exercises, Mm-hmm. and um, after the breakfast, I'm going at work, uh, and I will come in Yeah. one afternoon, I think, Mm-hmm. 1 p.m. Okay, 1 in the afternoon. Good. 1 p.m. Mm-hmm. and I will go to English class. Okay. Okay.
This much, sir. Okay, that's great. Thank you very much. Yes, Usman Mall, however, first tell us about yourself. How are you doing? Yes, Usman, I cannot hear you. आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही मुझे. I still cannot hear you, Usman. Yes, now हाँ जी, अभी आवाज अच्छी आ रही है आपकी. So, how are you doing, Usman? I'm doing well, sir. What about you, sir? Alhamdulillah, I'm doing great. I'm doing great. So, could you tell us about your weekly, daily or weekly schedule? कि आप डेली बेसिस पे आपकी ऐसी कौन सी पॉजिटिव हैबिट्स हैं जो आपको लगता है कि आपको फर्दर मूव करने में, आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करती हैं? Sir, first of all, get up early at Fajr prayers, Mm-hmm. and perform prayer and recite the Quran. Okay, great, Zabardast. Then first I repeat my daily schedule. Mm-hmm. First, I'm better and ready for job. Okay, great. My my mom ready breakfast maybe. I take my first breakfast at 8. Mm-hmm. Then I go for job and doing inventory management and lead the team Okay. and also teach the team for doing work. Mm-hmm. And after 6 p.m. I'm going for home, but sometimes I due to overtime, due to hard work, Mm-hmm. I late. Okay, So that okay. means so. Okay, okay. Good, thank you very much. So, Thank you. okay, my pleasure, welcome. Okay, so आप लोगों. Okay, now moving on to the word vocabulary part. Hmm, okay, so kindly repeat after me. Okay, as usual, we'll first do the repetition exercise, pronunciation exercise. उसके बाद फिर क्या? You will have to make sentences. So the first word is everyone turn on your mics. Yes. Asha, the first one word is terminate. 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 Mhm. Yes, Usman. Kindly repeat the word terminate. Terminate. Okay, good. Usman, I cannot hear your voice. Usman, are you there? Okay, I think there must be some connection issue. The second word is the terminate means खत्म करना. See, किसी भी चीज को खत्म करना, that is called terminate. For example, I am going to terminate the exams. कि मैं exams खत्म करने वाला हूँ. सही. और terminate actually is used ये किस context में यूज होता है? जब आप किसी चीज को अचानक से खत्म कर रहे होते हैं. सही. हो सकता है कि वो आप in the middle खत्म कर रहे होते हैं कि कोई चीज process में होती है लेकिन आप उसे खत्म कर देते हैं. So for that we use the word terminate. Okay. Now the second word is delusion. Delusion. Mhm. Delusion. Yes, delusion. Mala Abbas, yes, delusion. Good. And Usman? Okay, great. Okay, Usman, yes, okay. Okay, so delusion means फरेब. Okay, जो धोखा होता है, that is called delusion. ठीक, किसी भी चीज का धोखा होना. So that is called delusion. Okay, the third word is stubborn. 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 Yes. Yes, Malabasi? No, stubborn, stubborn. We are talking, we are on the third word now. Stubborn. Stubborn means ziddi. No, no, no. We are talking about the third one, Malabasi. ये लफ्ज है ना stubborn. ये तीसरा लफ्ज है stubborn. Okay. So stubborn का क्या मतलब है? जिद्दी. जब कोई you must have come across a child कि क्या कर रहे होते हैं? आप उनको बात बता रहे होते हैं, वो लोग बात मानते ही नहीं है.
आप उनको एक काम से मना करते हैं शैतानी वगैरह करने से, बट वो मना ही नहीं हो रहे थे। So those kids are called stubborn, but it is not just limited to kids. ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, सही है ये वर्ड stubborn जो हो गया है, सही कि you are such a stubborn man, you just do not listen to anyone, कि आप इतने जिद्दी इंसान हैं कि आप किसी की भी बात नहीं सुनते। Okay, the fourth word is majestic. Yes, Benafsha Mohammadi. Majestic. Majestic. Okay, majestic means शानदार। So हम इसे किसके लिए यूज कर सकते हैं? We use it for something that is very great. We can use it for sceneries, we can use it for painting. जो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग जाती है, we use the word majestic for that, शानदार। For example, you can say this painting is very much majestic. Okay, the next word is, yes, majestic. Thank you. The next word is rubble. 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 Rubble, exactly. Rubble means मलबा। तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर after an earthquake, after a heavy earthquake, all the buildings fall. तो जितनी वो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, टूट फूट जाती है, वो जो उनका सारा कचरा बच जाता है, गंद जो बन जाता है ना, वो कंक्रीट और along with all the concretes and वो ईंटें वगैरह, तो उनको क्या कहते हैं? That thing is called rubble। ठीक है, मलबा उसे कहा जाता है। या नेक्स्ट, बिनफ्शा मोहम्मद, ये बैकग्राउंड में आपके बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज कैजुअलिटी। Just repeat after me. Casualty. 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 Yes. Casualty. Benafsha Mohammadi, kindly say ये उसके लिए, yeah. Casualty. Casualty. Good. So casualty means जानी नुकसान. Whenever a certain event happens, a negative event, जंग वगैरह होती है, जिसमें, अच्छा, कैजुअलिटी किसके लिए होती है? ये जो लोग मर जाते हैं जंग में या किसी किस्म की भी लड़ाई वगैरह में, so that is called casualty। सही। So, for example, if 200 people die in a war or in a battle, या फिर कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जिसकी वजह से 200-300 लोग मर जाते हैं, we call it casualty। So, say it in a sentence like this: After the pandemic, after the corona pandemic, billions of casualties happened all around the world। तो ये कि कोरोना के बाद लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मरे। सही। The second last word is venture। Venture. Venture. Yes. Venture means मुहिम। या वेंचर सिंपली मीन्स के किसी ऐसा कोई काम करना है, ऐसी जगह पर जाना, ऐसी जर्नी करना जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। सही। लेकिन आप क्यों करते हैं वो जर्नी? बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग एज वेल। सो यू कैन ऑल्सो से कि लर्निंग लैंग्वेज इज अ वेंचर और लर्निंग लैंग्वेज कैन बी एडवेंचर। तो एडवेंचर जो वर्ड है वो बेसिकली इधर से ही निकला है, वेंचर से निकला है। सही। टू गो ऑन अ जर्नी दैट इज रिस्की। ओके, सो अ फादर गोज ऑन अ वेंचर टू ब्रिंग सम मनी फॉर हिज चिल्ड्रन। तो कि एक बाप जो होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए खाना लाने के लिए, पैसा लाने के लिए क्या करता है? वेंचर पे जाता है, मुहिम पे जाता है, क्योंकि उसमें खतरा भी होता है, लेकिन क्या करता है? वो अपने बच्चों का जो है ना पेट पालता है। सही। द लास्ट वन इज एनवी। Envy. Envy. एनवी का मतलब हसद करना। सही। तो हसद किसे कहते हैं? जिसको हम आम वर्ड्स में जेलिसी बोलते हैं। सही है, ही इज जेलस ऑफ मी। सो वी कैन ऑल्सो से इट लाइक दिस: ही इज एनवियस ऑफ मी और शी इज एनवियस ऑफ मी, कि वो बंदा मुझसे जलता है, वो बंदा मुझसे हसद करता है। सही। So right now Usman is riding a bike, so that is why he cannot join us. However, we have to make the best out of you two, Humara Basi and Dhaksha Mohammadi. Okay, so now you will have to use any four words in your conversation, starting with Binaksha Mohammadi. Say, Binaksha Mohammadi, you can ask a question or you can simply make a sentence, after which Mala Abbasi will help you out further using another word. सही है। So इनमें से कोई सा एक लफ्ज ले बिनक्शा मोहम्मदी, उसका एक सेंटेंस बनाए। सही है, जिसमें फिर माला अब्बासी फर्दर एक और सेंटेंस बनाएगी। Okay, sir. हम्म। My cousin is very stubborn. हम्म। यस। For sentences, sir. फोर सेंटेंस नहीं, आपने एक सेंटेंस बना लिया, सुनाओ। माला अब्बासी विल हेल्प यू आउट।
she can either ask you question or she can also further add another sentence. Yes, Mala. Okay. He's a stubborn. That's why her wife terminate her relationship with him. Mm-hmm. Okay. So now, yes, Binafsha Mohammed. Okay, sir. Mm-hmm. Yes. So did you get what she said? No, sir. Okay. She said कि ये जो है ना कि वो स्टबन है, वो जिद्दी है, इसीलिए जो है ना उसकी माँ ने उससे अपना रिश्ता खत्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया. सही. So now you have to add another sentence using one of these words. जी बिनफ्शा, एक और Other सेंटेंस बनाए. other sentence, or I will continue the Mala's sentence. Yeah, you have to continue the whole conversation, but you have to use some other word in the sentence. Um. She. Yeah. सर मसला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Problem. Okay. Problem or dilemma. Yeah. Okay. What kind of problem? Her problem is Wincander. What's Mohim loves, sir? Okay, In Mohim, English. venture. Mohim, venture. Venture. What kind of venture problem she have? No, venture is basically माला venture का मतलब ये होता है कि जब आप किसी सफर पे निकलते हैं, खतरनाक सफर पे, उस सफर को venture बोलते हैं. सही. Yes, so could you make another sentence? Let's say delusion. Yes, Mala. Delusion? No, sorry, Binafsha. Delusion के बारे में एक sentence बनानी. चले अलग sentence बनाएं उस context से हट के. Which one, sir? Delusion. Delusion, sorry. The man delusion me fakering. क्या कहा आपने? Could you repeat yourself again? The man Yes. delusion me fakering. Okay, delusion means फरेब, धोखा. वो चीज जो हमें सच लग रही होती है पर बेसिकली वो झूठ होती है, आंखों का धोखा होता है. Yeah. How can I Maverick? Well, okay, Mala, May let's I make it this? yeah, go on, Okay. so that we may proceed ahead. I saw a great ghost which was formed by the clouds, but it was delusion. But it was delusional. सही. It was as a noun. ये Delusion. जी यहाँ जो delusion लिखा गया है ये Delusion. adjective के तौर पे, लेकिन जब आपने क्योंकि आपने noun के तौर पे यूज किया, you have to say it was delusional. आखिर में al भी यूज करेंगे. But it was a great sentence. Thank you very much. Okay, let's move ahead for the phrases. So again we have 4 phrases. The first one is walking disaster. सही. मतलब चलती फिरती तबाही. So the sentence is she is a walking disaster. Difference between illusion and delusion.
इल्यूजन जो है ना, ये ऐसी चीज जो दिखाई जाती है अक्सर। इल्यूजन आपको कोई दिखाता है, सही। जबकि ये उस्मान ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इल्यूजन एंड डिल्यूजन। तो मतलब दोनों का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट काफी मिलता जुलता है, धोखा रिलेटेड, दोनों धोखे से ही है। बट जो इल्यूजन होता है वो आपको कोई बंदा दिखाता है, वो आपको कसदन दिखाया जाता है उस्मान। जबकि डिल्यूजन है, वो क्या होता है, वो अक्सर आपका अपना खामख्याली होती है, सही है। आपकी माइंड की अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसमें भी आप धोखे में ही होते हैं, सही। डिल्यूजन में भी धोखे में होते हैं, इल्यूजन में भी धोखे में होते हैं। बट द डिफरेंस इज कि इल्यूजन इज शोन बाय समवन एल्स, while delusion is your own creativity in your own mind, सही। I hope you're clear. Okay, so the phrase is walking disaster, मतलब चलती फिरती तबाही। Sentence is she is a walking disaster. Wherever she steps, havoc creaks. Havoc creaks का मतलब कि तबाही मच जाती है। वो चलती फिरती आफत है, वो जहां भी कदम उठाती है तबाही मच जाती है, सही। Second phrase is lower your gaze. Gaze means निगाह, नजर. So you should lower your gaze before the king. Okay, welcome, Usman, welcome. Okay, so you should lower your gaze before the king. कि आपको बादशाह के सामने अपनी निगाह नीचे रखनी चाहिए, अपनी नजरें झुका देनी चाहिए, सही। lowering the gaze. These are idioms and आप क्या कर सकते हैं, you can use these idioms in your daily life. The third sentence is if you read between the lines. To read between the lines का मतलब कि आप क्या करते हैं जब अक्सर इस तरह होता है ना कि कोई बंदा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू से एवरीथिंग विद क्लैरिटी, बट ही गिव्स यू हिंट्स। कि एक बंदा होता है, आपसे बातें कर रहा होता है, लेकिन क्या करते हैं, आप उसकी बात को डायरेक्ट नहीं समझते, तो आप थोड़ा सोचते हैं उसकी बात पे कि वो कहने को एक बात करता है लेकिन मतलब उसका कुछ और होता है। नाउ दैट इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जब आप वो सोच रहे होते हैं, सही है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस यू विल फाइंड हिम लाइन। अगर थोड़ा सा गौर करें आपसे, अगर आप उसकी बातों पे थोड़ा गौर करें तो आपको वो झूठा मिलेगा, सही है, तो आपको पता चलेगा कि वो झूठ बोल रहा है। एंड द फोर्थ वन इज इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब कि बिल्कुल आखिरी लम्हात में, बिल्कुल आखिरी वक्त में। आई रीच द स्कूल टुडे इन द निक ऑफ टाइम, कि मैं बिल्कुल आखिरी लम्हात में स्कूल पहुंचा, सही। So I want you, Mala Basi and Binaksha Mohammadi, to make just one sentence, okay? Because we are also short on time. So you have to make one sentence. Yes, starting with you, Mala Basi. Take any one of these phrases and kindly make one sentence. Yes, Mala Basi, can you hear me? Okay, Binaksha Mohammadi, let's go with you. Let's unmute you. Okay, sir. Yeah. I Richard. Um, I reached the English class in the nick of time. Exactly. You reached the English class, or you can say, I entered the English class in the nick of time. Good. Okay, so let's move ahead because I think there's an issue with Mala Abbasi, internet issue he's facing because of the rain. And Usman, kindly text me when you reach back safely, okay? So that you can also take part in these activities. Yes. एंड आप लोग जो है ना अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर लें, सही है, याद से। इट इज शेयर्ड विद यू इन द चैट हियर एंड आल्सो इन द ग्रुप। ओके, सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर मेन लेक्चर टुडे। देखिए, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, व्हेन यू आर टेलिंग मी अबाउट योर हैबिचुअल डेली हैबिट्स, सही है, कि अबाउट योर डेली स्केड्यूल, जब आप उसके बारे में बता रहे थे, यू आर एक्चुअली यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। आप क्या यूज कर रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये यूज करते। I, you are using I, we, you, they, he, she, it, and along with that you are using the first form of verb, सही है। वर्ब की एस या ई एस फॉर्म या फिर विदाउट एस ई एस फॉर्म भी आप यूज कर रहे थे। सो इसके लिए जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम यूज ही इसी के लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू टेल अबाउट आवर हैबिट्स, अबाउट आवर हैबिचुअल थिंग्स, सही है, दैट वी डू ईदर ऑन वीकली बेसिस और डेली और मंथली बेसिस, ओके, or it can be even on yearly basis as well.
अच्छा, so if you are making if you have plural subjects, for example, I, you, we, they, students, तो उसमें आप वर्ब की एस या ईएस फॉर्म नहीं लगाते. फॉर एग्जांपल, I play, you play, we play, they play, students play. Now अब ये जो students है ये plural subject लगा हुआ है, सही है. If plural noun है, if it were singular तो उसमें फिर एस ईएस फॉर्म लगता है, सही. Now coming towards the singular ones, he, she, it, Sarah हो गया, Bird हो गया, these are singular nouns. तो इनके साथ आप क्या करेंगे? You will use the SOES form of verb. She plays, they play, he plays, she eats, Nazma eats. सही है. तो इसमें क्या है कि एस या ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ना आप यूज करते हैं, जबकि प्लूरल में एस ई एस फॉर्म यूज नहीं करते. लेट मी रिपीट इट अगेन. प्लूरल जो है ना आपके पास सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, आई, यू, वी, दे, स्टूडेंट्स, you only use without SES form of verb. While it's singular, you use S and ES form of verb with he, she, it, or singular name. See? These are some of the examples. I wash my face every day. Rumeshi cleans her room. अच्छा, मैं रोज अपना चेहरा धोता हूँ या धोती हूँ. So देखें, I लगा है. After that, we are not using the SE or ES form of verb. We are using the base form of verb. And after that, we are using simply object. So Rumeshi cleans her room once a month. तो अब पहले सेंटेंस में एवरीडे लगा है कि आई डू दिस एक्टिविटी एवरीडे, कि यही काम मैं हर दिन करता हूँ. रुमेशी क्लीन्स हर रूम वंस अ मंथ. फिर रुमेशी क्या करती है कि वो सिर्फ महीने में एक बार ही अपना कमरा साफ करती है, बट वो बिकॉज शी इज डूइंग इट ऑन मंथली बेसिस, सो इट इज हर हैबिट, इट इज हैबिचुअल टास्क फॉर हर टू क्लीन हर रूम ऑन मंथली बेसिस, कि वो हर महीने अपना कमरा साफ करती है. And you can also see कि after the subject we are using S or ES form of verb because the subject here is singular. रोमेशी एक ही लड़की है ना, एक ही लड़की की बात हो रही है. That is why we are only using the without S and ES form of verb. Christians go to church every Sunday. So Christians here is the plural noun, plural subject. That is why we are using without SES form. हम जो है ना SES form use नहीं कर रहे. SES फॉर्म के बगैर जो वर्ब है वो हम यूज कर रहे हैं. एंड क्रिश्चियंस गो टू चर्च एवरी संडे. नाउ गोइंग टू चर्च एवरी संडे इज हैबिचुअल टास्क दैट इज परफॉर्म्ड एवरी वीक. हर हफ्ते ये काम किया जाता है. सी, हर हफ्ते अंग्रेज जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो चर्च जाते हैं, सही. And the last example is Subhash conducts webinars twice a week. Webinar इसको कहते हैं कि आप लोग जब ऑनलाइन जो है ना कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, ऑनलाइन जो है ना सेमिनार अटेंड करते हैं, that the one you attended while we were conducting one, while I was conducting one. जब हम आपको कॉलेज ऑफ इंग्लिश के बारे में बता रहे थे, जो सेमिनार आप लोगों ने ज्वाइन किया था, that was now called webinar. Now why it is called webinar? क्योंकि क्या है, ये वेब पे लिया जाता है, इंटरनेट पे ये सेमिनार किया जाता है, सो इसीलिए इसके लिए टर्म यूज करते हैं हम वेबिनार्स. सो सुभाष जो है ना वो क्या करता है, हर 2 हफ्ते में एक बार वेबिनार कंडक्ट करता है, सही है. मतलब ही डज नॉट डू इट डेली, ही डज नॉट डू इट वीकली, ही डज नॉट डू इट मंथली, बट ही डज इट ट्वाइस अ वीक. सॉरी, एक ही हफ्ते में ये 2 बार करता है, सही. तो ये क्या है कि एक ही हफ्ते में 2 बार करना, इट हैज बिकम अ हैबिट फॉर हर, फॉर हिम, फॉर सुभाष. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये हो जो है ना ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस या सिंपल प्रेजेंट का टेंस हो जाता है. And after Subhash, we use the S or ES form of verb. So देखिए, now you are in the table below, you are given definite time कि आपको वक्त दिया गया है. Mala Basi and Benafsha Mohammadi, you will have to make sentences and you will have to use this time. You will either have to use daily, every day, night, Friday. See? So Mala Basi, you have to ask a Okay. question from, yes, you have to ask a question. बल्कि क्वेश्चन छोड़े, वो क्वेश्चन का सेशन जो है ना वो बाद में आएगा. So for now you have to just make a sentence. So Mala Basi, kindly give me 2 sentences. And one must be in singular and the other Okay. must be in plural. Say. I get up daily at 5 p.m. 5 a.m. Mhm. Yes, give me one more sentence, but with singular this time, कि जिसमें S और ES का verb लगे. Okay. She comes in our home every day. He comes at our home every day. सही. Homes के साथ हम at लगाते हैं.
Okay. Okay, but thank you very H. much. Nice example. Yes, thank you. Okay, now, yes, Vinafsha Mohamedi. Kindly give me two examples in a sentence. Okay, sir. Uh, I read the I read the book Mm-hmm. Yeah. once a week. Okay, once a week. So you read the book once a week. Good. Now, give me a sentence using the SOES form of verb. Okay, sir. Yeah. She drives her car every day. She drives her car every day. Good. Thank you very much. Okay, moving ahead, we have, sorry. तो इसमें जो है ना अब now we are also given time जो कि you have already used it कि किस तरह you are supposed to use time when you are given time कि always हो गया हमेशा often कभी कभार usually बाज वक्त में बाज औकात sometimes also means कभी कभार rarely बहुत ही कम never कभी नहीं ओके तो इनके साथ क्या होता है कि ये भी जो है ना you use this in order to show time. However, the first one ये क्या है कि daily, every day, night, Friday, once a month, week, ये definite time है, ये fixed time होते हैं, सही है? कि इसमें क्या होता है, हमें पता होता है definite times में कि हम जो है ना कोई काम है कितनी बार किए जा रहे हैं. Daily करते हैं, daily we do anything on daily basis, और every day और या फिर रात को या फिर जुम्मे के दिन, once a month एक बार या हफ्ते में एक बार हो गया, twice a week हफ्ते में दो बार या 3 times a week हफ्ते में 3 बार every other day every other week या हर आने वाले हफ्ते में या हर आने वाले दिन में हम करते हैं so it is called definite time का मतलब ये होता है कि हमें जो है ना पता होता है कि हम जो है वो काम कोई भी काम हो एक्स वाई जेड whatever it is कि हम वो कितनी बार किए जा रहे हैं और हम वो कौन कौन से दिन पे कर रहे हैं exactly we know कि when exactly we are doing a task. While when it comes to indefinite time, ये जो टेबल आप लोग देख रहे हैं purple table on the right hand, तो इधर क्या है this one is called indefinite time or adverbial. Let's not just go toward adverbial क्योंकि वो जो है ना थोड़ा advanced level की चीज है. And we are more concerned with here in the present simple. सही तो ये क्या चीज है कि always हो गया है मतलब हमेशा अब कोई काम है हमेशा तो होता है. But how often does it happen in a week or in a day or in a month? We have no idea. अब if I were to tell you कि I always drive, तो उसका ये मतलब तो नहीं होता है कि मेरी 24/7 रात को भी मैं गाड़ी चलाता हूँ दिन को भी मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ सही लेकिन मैंने क्लैरिफाई नहीं किया आप लोगों को कि मैं दिन में या रात में कितनी बार गाड़ी चलाता हूँ सही अगर मैं डेफिनेट टाइम यूज करता मैं क्या कहता आई ड्राइव अ कार एवरी डे कि मैं हर दिन चलाता हूँ गाड़ी बट आई ऑलवेज ड्राइव अ कार तो अब ये नहीं पता कि अब मैं हफ्ते में गाड़ी चलाता हूँ दिन में चलाता हूँ महीने में और आई डू इट इन अ ईयर अच्छा ऑफन हो गया इसी तरह यूजुअली नॉर्मली समटाइम्स ओकेजनली रेयरली नेवर कि मतलब हमें पता नहीं होता कि हम काम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो कितनी बार काम कर रहे होते हैं सही ओके नेवर हेयर रेयरली का मतलब कि बहुत ही कम अब है कितने बार किया जाता है कोई काम whether it is done twice a week or simply it is done 5 times a week we have no idea about that when it comes to never भी क्या होता है कि जब हम कोई काम कभी भी नहीं करते सही कभी नेवर टॉक्स विद शिरोमी तो उसको भी क्या कहते हैं इंडेफिनिट टाइम में आता है अब नेवर कभी इसी केस पे कि वो काम कभी कभी हो जाता है सही है इसीलिए हम जो है ना नेवर को भी वी पुट इट इन इंडेफिनिट टाइम इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इंडेफिनिट टाइम क्योंकि बाजों का हो सकता है कि वो हम कोई काम गलती से कर लें सही है तो उस वजह से हम क्या करते हैं वी यूज नेवर इन indefinite time because it might happen at once or twice. Okay, now coming towards the negative here. तो negative हम किस तरह बनाते हैं if you remember आप लोगों ने क्या किया था in present continuous आप लोग is mr के साथ not लगाते थे here we use two verbs सही है for the plural ones या फिर जहाँ के जिन वर्ब्स के साथ एस ई एस नहीं लगता था उनके साथ हम डू नॉट और डोंट लगाते हैं और उसके बाद दिस फॉर्म ऑफ वर्ब और जिनके साथ हम जिन वर्ब्स के साथ एस या ई एस लगाया करते थे ना ही शी इट सैरा और बर्ड इनके बाद वी पुट एस और ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब सो हियर the s or es form of verb would be replaced by does not or doesn't
See, and after that we'll be using the same base form of verb. See, for example, I drink coffee. If the sentence was like this, okay, I often drink coffee. तो इसको किस तरह नेगेटिव में चेंज करेंगे? I don't drink coffee. But if this sentence were like this, he drinks coffee. He often drinks coffee. So you are supposed to change it like this in a negative. He doesn't drink coffee. अब जब doesn't लग गया है या does not, तो उसके बाद drink के साथ we will never use the S form of verb. सही है? In negative, both in negative and in interrogative, सवालिया जुमले में भी जब भी हम प्रेजेंट सिंपल में जुमला बनाते हैं वी नेवर यूज द एस और ईएस फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम बेस फॉर्म ही यूज करते हैं. आई होप यू गॉट मी. सो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन स्टिल आस्क मी. सही. So now could Mala Basi, Okay, could sir. you, yes, so now could you make a sentence with first its positive one, say affirmative sentence, and then you will have to change it into negative. Okay, sir. Yeah. I write a book. Mm-hmm. I don't write a book. I don't write a Do book. I Good. write a book? यस ओके चलें, एक जो हम आगे करने वाले हैं वो भी आपने पहले से बता दिया. थैंक यू. एंड नाउ यू काइंडली कुड यू यूज द डज नॉट फॉर्म. यस. Okay. She does not do her homework. एंड हाउ आर यू सपोज टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव और अफर्मेटिव? She do her work. ओके, ही और शी. She ओके, शी. बट यू विल से इट लाइक दिस कि शी डज होमवर्क. she सही. does her homework. Yes, एग्जैक्टली, क्योंकि she does her. हाँ एग्जैक्टली, शी डज होमवर्क या शी वाटर्स द प्लांट. सही. Binafsha Mohammadi. Yes, could you give us an example of turning the affirmative into negative and negative into affirmative? Okay, sir. Mm-hmm. They have party this month. Could you repeat yourself again? They have party in this month. Okay, they have नहीं, आपने क्या करना है? We are not showing possession here. आपने यूज करना है I we you they के साथ कोई base form of verb without ses form. सही. ये कौन सा काम है जो habitually होता है? You will have to tell us that. Okay. They playing the volleyball every day. They play volleyball every day. Good. So how would you change it into negative? They do not play volleyball every day. Okay, they do not play. Great. And now could you use the verb of SPS form and change it into negative? She drives her car every week. She drives her car every day. And now kindly change it into negative. She does not drives. She does not drive. See, so this exactly was our point. Every week. Every week, everyone. सही. Good. अच्छा, इसमें देखें कि आपने जब she लगाया ना यहाँ तो इसका does not आ गया ना बिनफ्शा मोहम्मदी. So after does not you are supposed to form base form of verb. सही है. Means without s or es form of verb. सही है. Okay. Iqbal sahab, I'll give you a bit Yes, of sir. recap. Okay, हमने So क्या I पढ़ा? understand, sir. Okay, good. So now could you give us an example in the present and then change it in, in the positive and then change it into negative? Okay, sir. Yeah. They do not make noise. Sorry, पहले affirmative बनाना. अच्छा. They make a noise in the class. The students make a noise in the class. Good. Yes. The student do not make a noise in the class. They do not make noise in the class. Good. Yes. And now could you change it into the does not form? Okay.
He does not make a noise. He does not make a noise in the class. He makes a Mhm. noise in the class. Good. Thank you very much. Thank you very much. Okay, the next one is now do. अभी क्या करते हैं कि we change it into question, कि हम इसको interrogative में question में change करते हैं. ये भी वैसे ही एक वो है exercise है. The only difference is that you have to begin the question with either do or does. Okay? If the subjects are I, you, we, they or plural subject, then आप क्या करते हैं फिर उसके साथ do लगाते हैं. पहले do आएगा, True. फिर subject आएंगे, फिर base form of verb. वही same structure है. सही? Yes. अच्छा, and for singular you have to instead put does. जब he, she, it हो गया या singular name हो गया है, you have to first put does, then the subject, and then base form of verb. For example, we are given the example of the plural, they play cricket. So do they play cricket? Yes sir हो जाएगा. Or she plays cricket. Does she play cricket? Okay. Yes. Now I'll give you another example. Okay, he uses his phone. Does he use his phone? सही. इस तरह they use their phone. Do they use their phone? सही. So with those plural subjects, you have to use the verb do, Does. helping verb. See, and for the singular subjects, you have to use this helping verb does. See. Yes, like Balsab, could you give us two Yes. examples, one with do and one with does? Yes, sir. Only the third person singular जो है ना उसके साथ does इस्तेमाल होगा. जी. Only third person singular या हाँ, किसी चीज के only नाम exactly yes, only third person singular हो या singular name हो, name so हो, उनके उसके लिए साथ हम क्या यूज करते हैं does exactly. does. Yes, thank you. Yeah. Sir, yes. He इसको सर इंट्रोगेटिव में बनाना क्वेश्चन में. Yes, yes, this time you have to change Okay, it into interrogative. okay, okay. He does his work. He does his work daily. Mm-hmm. Does he No. Yeah, yeah, do go his on. work? Does he do his work daily? Good, 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 good. Yes, now with now with do. Yes. Uh, they they do their work daily. Mm-hmm. Do they their work daily? You Do can they change. do their work daily? Do they Good, do yes. their work daily? Good, good. Do they do their work really? See? So now, Binaksha Mohammadi, could you give us two sentences? Yes, sir. Yeah. Uh, does she complete her homework? Does she complete her homework? So change it into positive. She complete her homework. She completes her homework. सही. Completes क्योंकि her homework. yes, जब does हटेगा ना ये तो उसका does का जो es या s है, that will be changed. वो जो है ना वो help उसके ये main verb जो होगा उसके लिए चले जाएगा. सही. So now kindly make another sentence with do. With what, sir? With do the verb do. Okay. I do my exercise morning. Do I my exercise morning? Okay, good. Yes, Mala Basi. Yes, sir. Now, could you sorry for interruption. Meenakshi Modi, could you repeat your sentence again, the last one? Do my exercise. Okay, you would say like this: do I do my exercise daily? Okay. Okay. Yeah. Yes, Mala Basi. Yes, sir. Kindly make sentence just like Iqbal Saab and Meenakshi Mohammadi did. Okay, sir. Mhm. I will take my own verb, or just I will use do and does. You just have to change the do into the negative, the affirmative into interrogative and interrogative into affirmative. Both of do and does. Okay. Do we
go to shop. Yes, so इसको अभी positive में change करें. We go to shop. Okay, great. And now change make a sentence of does. Does. Okay. Hmm. Does she play with his friend? Does she play with And her friend? Good. she plays with her friend. She plays with her friend. Good. Okay. So you are giving examples here. You want examples here? I sanitize my hand. Okay. Do you sanitize your hand? Yeah. Do I sanitize my hand? The girl. The girl disturbs me every time. Does she disturb me every time? सही? So यहाँ पर थोड़ा इन्होंने यहाँ subject को change किया, so that becomes a bit confusing. However, we will move ahead because you have already given me examples. Okay, so I think we have done this activity as well in the beginning of the class. Okay, so but I'd say let's skip this one as well and go to this one. Yes. So अभी हमें बताया गया है कि हम जो है ना किस किस कामों के लिए ये यूज करते हैं the present simple ones. Okay. For the first purpose of using present simple is for general truths. वो चीजें जो क्या होती हैं जो फैक्ट्स हैं हकाइक हैं that can never be changed. जो भी हो जाए सही है. So for those purposes we use the term we use the sentence present simple. Say for example water freezes at 0 degrees. सही है ना कि आप जब भी पानी का टेम्परेचर 0 कर देंगे 0 डिग्री पे रखेंगे तो क्या होगा वाटर विल फ्रीज. यही होता है ना इसी तरह ही होता है ना. ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जब 0 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो वाटर स्टार्ट्स टू बॉयल. सही है. इट डज नॉट बॉयल. इट बॉयल्स ऑन 100 डिग्री एंड इट फ्रीजेस ऑन 0 डिग्री. So this is a fact. So if you were to tell it to someone, you'd say it like this: the water freezes at 0 degree. So आप देखें कि water is the subject here. Freezes जो है ना यहाँ पर क्या है? It is S or ES form of verb. और उसके बाद सारा subject object लगा हुआ है. सही? The next sentence: the earth revolves around the sun. Again, it is a fact. हमें पता है कि दुनिया जो है ना वो सूरज के गिर्द ही घूमती है. सही? So it is also a fact that can never be changed. So the earth, ये earth is the subject here. Revolves is क्या हो गया? The S or ES form of verb. And around the sun क्या हो गया है? It is an object. Water boils at 100 degree. I've already given you this example. A magnet attracts iron. अब चाहे जो भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए तो मैग्नेट है वही आयरन को अट्रैक्ट करेगा. आयरन है मैग्नेट को के करीब इसी तरह जाएगा. सही. So this is also fact. इसमें क्या है बेसिकली all of the scientific facts here we use all of the scientific facts in present simple. जितने भी scientific facts होते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायो वो हम क्या करते हैं प्रेजेंट सिंपल के थ्रू ही हम बता रहे होते हैं. A magnet attracts iron. Now magnet here is the subject. Attracts is S or ES form of verb. And iron क्या है? It is the object. So give me three examples. Mala Basi coming to you again. Give me three examples. Give me two examples of any scientific facts or any general truths. अब देखिए scientific fact. It is not only yeah. Just give me one more example. It is not only limited to scientific facts. सही है. इसमें क्या होता है कि अक्सर ऐसी खबर जो कि पॉलिटिकल हवाले से हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें. सही है. मतलब कि वो चीजें जो कि हकाइक होती हैं हमेशा. सो यू हैव टू ऐड दोस. सही. यस कैरी ऑन. Okay. Ice melts on room temperature. Yes, ice melts on room temperature. Good. Okay. And the apple falls on the ground because of Earth gravity. Because of gravity. Great. Thank you very much. Apple falls on the ground. Good. Yes, Binaksha Mohammadi. Will you give us two scientific facts, I would say. Can we say boys better than girls play football? This is the I don't know. It is because it is subjective. Because even there are teams of girls that are far better than boys. See, so it is something subjective. But here we have to speak about general truths or scientific facts. Okay, so give us any two examples regarding science.
Yes, Benafsha. Uh, I don't know, sir. नो तो देखिए, अगर आपको कोई भी साइंस के बारे में कोई भी फैक्ट पता हो, सिंपल फैक्ट्स, सही है, जो आपने कहीं पर भी पढ़े हो, सूरज मगरब में गुरूब होता है, मशरिक से निकलता है, इट इज सिंपल फैक्ट, सही है। क्या है कि जो जब बादल आते हैं तो बारिश होती है, इट इज सिंपल फैक्ट, सही। सो आफ्टर द रेन रेनबो कम्स, सही है, रेनबो अपीयर्स, इट इज अ सिंपल फैक्ट। सो यू हैव टू जस्ट सिंपली थिंक अबाउट टू फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, एंड टेल इट इन सिंपल प्रेजेंट। Yes. Esmail Abbasi. No, sorry, Ibn Extra Mohammadi. Uh, sir, can I? Mm-hmm. Yes. Is there any issue, Ibn Extra Mohammadi? Mother loves her child. But it is not, again, it is not scientific facts. देखिए अब because sometimes there are even mothers that don't love their child, सही है ना? तो साइंटिफिक फैक्ट में देखिए क्या होता है कि जो साइंटिफिक फैक्ट में देखिए कि जो बात होती है ना वो हमेशा वैसी ही रहती है, इट नेवर चेंजेस। इकबाल साहब, यस, कुड यू गिव अस टू एग्जांपल्स आफ्टर दैट? दिनक्षा मैं आपकी तरफ फेर आऊंगा इन्हीं एग्जांपल्स के लिए, बिकॉज आई वांट टू मेक, यस, बिकॉज आई वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग। जब तक आपको कोई चीज क्लैरिफाई ना हुई हो, आई डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड। या Yes, sir. यस इकबाल The साहब। the Earth attracts everything towards its center. यस, गुड। नाउ दिस इज अब देखिए दिनक्षा मोहम्मदी, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है ना कि दुनिया हर एक चीज अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ, सही। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, वन मोर एग्जांपल। The stars shine at night, Yes, exactly. Thank you very much. So, Benafsha and Mohammed, the yeah, sun sets in the west. good. So, देखिए Benafsha Mohammed, these are also some of the scientific facts कि क्या है कि रात को सितारे चमकते हैं, सही है, we cannot see them in the morning, सही। और सूरज है वो मगरिब में ही गुरूब होता है। अब ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि मशरिक में जाके गुरूब हो जाओ, तो कयामत ही आ जाएगी अगर मशरिक में गलती से जाके गुरूब हो जाता है, सही। सो Benafsha Mohammed, kindly give me two examples. Okay, sir. The moon revolves around the earth. Yes, yeah. The moon Mhm. revolves Revolves, around yes, around the earth. Good. the air. Exactly. The moon revolves around the earth. Good. Yes, one more example. Yes, Vinashra Mohammed, one more example. We see moon at the night. Okay, we see moon at night. Good. So हम रात को चांद देखते हैं, सही है। So I hope you got the idea. But देखें, if there is any confusion at any point, आप मुझसे सवाल पूछा करें, चैट बॉक्स में पूछ लिया करें, इस वक्त पूछ लिया करें। So yeah, if you are not able to speak here, you can ask me in the chat box. So yeah, so I'll come again. I'll repeat again because our main purpose is to क्या है कि clarify you, कि आप लोग के जो concepts हैं वो clarify हो जाएं and you learn, you start speaking. Okay? Yes. Another purpose of simple present is कि क्या करते हैं ये for it is used for instructions and directions. तो ये आपको instructions और directions भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक राइट एट द जंक्शन। अब आपसे कोई रास्ता पूछेगा तो क्या करते हैं आप, जब किसी को रास्ता बताते हैं तो आप क्या करेंगे कि यू यूज द प्रेजेंट सिंपल, बी इट इन उर्दू और इट इंग्लिश और इन फारसी, whatever the language it is, so you will always be using present simple। अब टेक राइट एट द जंक्शन, कि जंक्शन के मतलब कि जहां पर मोड़ आ रही है, जहां पर सड़कें मिल रही हैं, जंक्शन कहते हैं मिलाप को, कि जहां पर सड़कें मिल रही हैं वहां पर आप दाहिने हाथ पे मुड़ जाएं, सही। सो अच्छा, ये तो डायरेक्शन होगी। सेकंड वन इज डायरेक्शन एज वेल, वॉक अलोंग द स्ट्रीट, कि क्या करें आप लोग जो है ना कि स्ट्रीट के साथ ही जाएं, गली के साथ साथ जाएं, सही। गो पास द चर्च, कि आप लोग चर्च से होकर गुजरें, मस्जिद से होकर गुजरें। सो दीज आर डायरेक्शंस। नाउ
It is also used for instructions. जब आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं अपने से छोटों को, या क्या करते हैं, इट इज इवन यूज फॉर ऑर्डर, सही है ना? सो इट इज यूज फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स, किसी को हुक्म देते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, ओपन द विंडो। अब नाउ दिस इज इंस्ट्रक्शन, कि आप किसी को कहते हैं कि खिड़की खोल दो। सो यू मे नोटिस के इन दीज एक्चुअली we use, now I have also a little question here. So you may notice one thing, okay, in all of these sentences, we are not using the S or ES form of verb. Why? We are using without SES form of verb. Sir, because there is no subject mentioned. That's why we are using. Yes, you are quite close Maybe enough. this one may be Yes, two you are, person, yeah. maybe one person. Then that way. Mhm. 1%, yes, you are actually, I'd say you are 90% close, Mala Basi. Yes, Iqbal Saab, Banafsha Mohammadi, any Maybe guesses? sir, Yeah, maybe it's used for you. That's why exactly, you is exactly, exactly. That is the answer. तो क्या है Second कि person. ये सेकंड पर्सन हम जो है ना, क्योंकि जब हम हुक्म देते हैं, whenever we are telling someone, instructing someone or giving someone direction, वो हमारे सामने का ही बंदा होता है, he is always second person and he is always you, सही है? For that person we use you. So you actually, हम क्या कहते हैं कि you open the window, you take right at the junction, you walk along the street. लेकिन वो जो you word होता है, that is understood, जिनसे हम बात करते हैं उनको भी पता होता है कि ये बात मुझे से की जा रही है, और हमें भी पता होता है कि देयर इज ओनली वन पर्सन वी आर टॉकिंग टू। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जो है ना वो यू को इस्तेमाल नहीं करते। इवन इन उर्दू वी डू द सेम, कभी करते हैं कभी नहीं करते। हम उर्दू में क्या कहते हैं कि आप यहाँ से मुड़ जाएं, या फिर हम सिंपली कहते हैं कि यहाँ से मुड़ जाएं, इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, सही? वी आर नॉट यूजिंग द सब्जेक्ट, हालांकि सब्जेक्ट इज देयर, सब्जेक्ट जो है ना, बस वी आर सिंपली नॉट यूजिंग इट बिकॉज वी नो द कॉन्सेप्ट के सब्जेक्ट इज देयर बट वी डोंट नीड टू यूज इट। So that is why we do not use the S or ES form of verb. So okay, and instructions, directions, और क्या हो गया है, किसी को हुक्म देना हो, order, for these three purposes we use present simple, सही? So Iqbal sir, could you give me three examples, one for direction, one for instruction, and one for ordering? Yes. Okay. Move straight along the road, and after 1 mile, turn left. Okay, great. So this was the direction. Yes. Now for Yes. instruction. Wake up early in the morning for good health. Okay, this is instruction. Yes, and what about order? Or shut the door. Shut the door. सही है. So this is order. Yes, Malabasi. okay, sir. Yes. Now I want you to give some sort of instructions to Binaksha Mohammadi. Any sort of instruction regarding language. Banaksha Muhammadi, don't hesitate while you ask some question from sir. So But don't hesitate. Do not hesitate. Thank you very much. Now Binaksha Mohammadi, could you give direction to either Iqbal Saab or Mala Abbasi? Direction? So what's the direction, sir? डायरेक्शन मतलब कि आप जब किसी को रास्ता बता रहे होते हैं, सही है? इस तरह हुआ होगा ना कि कभी आपसे कोई रास्ता पूछता है एंड यू हैव टू टेल इट के पहले आप सीधे जाएं, देन टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट एंड देन गो स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अहेड, सही है? तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन। Okay, sir. Go left and turn right. This is there is the bus stop. Exactly, good. Thank you very much. We'll be using all of these sentences. देखिए ये जो तीन चीजें हैं, you have to keep it in mind. Instruction, direction, and order. Because at the end of our role play, we'll be using all of these. Actually, you will be using all of these, right? okay, sir. Okay, so these are some of the things you will be you have to keep in mind to do and not to do. Okay, I like to eat biryani, but my just अच्छा, ये क्या करते हैं आप लोग के in the first sentence if you are comparing or contrasting something, के पहले में आप बताते हैं कि ये काम किया जा रहा है, and in the second one you tell कि this thing is not being done, सही? तो ये काम नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए क्या करते हैं, in order to combine those two tenses we either use but or we either use while, सही? For example, I like to eat biryani but or while my sister doesn't like it, कि मुझे बिरयानी खाना पसंद है लेकिन मेरी बहन को बिरयानी पसंद नहीं।
So both of these are present simple, but the first sentence is in affirmative while the second sentence is in negative. तो क्या करते हैं हम इसमें कि एक सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा जब भी आप बट या वाइल यूज करेंगे, और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, उसमें नेगेटिव का होगा। सही। हमेशा बट या वाइल के जरिए वी जॉइन अपोजिंग आइडियाज, वी जॉइन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। तो उसमें जो आइडियाज एक दूसरे के खिलाफ जो बात कर रहे होते हैं ना, हम बट या वाइल के जरिए ही ऐड करते हैं। सही। नेक्स्ट इज दया एंड हिज सिस्टर प्ले टेनिस while Ram and I don't play। कि दया और उसकी बहन टेनिस खेलते हैं जबकि राम और मैं टेनिस नहीं खेलते, या बट लेकिन राम और मैं टेनिस नहीं खेलते। So you can see कि in the first sentence we are using the positive or affirmative, while in the next sentence after while or but we are using the negative here. See? So Divya usually cleans her room while or but Suresh never cleans his room. Again, the first is the positive and the next is the negative idea. सही। so आपने क्या करना है, you have to either आप पहले negative idea को भी पहले ला सकते हैं या negative idea को बाद में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को one of them must be positive idea and the next one will be negative idea, and you will have to use you will have to join both of these tenses using either but or while। सही है। So, Mala Basi, yes, I want you to ask any sort of question from Iqbal Saab, and he will reply you using but and while. Say, Okay, sir. so think of a sentence. Yes. Iqbal sir, what you like and what your wife don't like. Yes, I like to eat rice, but my wife don't like rice. Okay. Yes. Great. But Iqbal Saab was talking, but my wife doesn't like. Yeah, does not Okay, yes, because sorry. yes. No, that's great. That's great. Thank you. Okay. Now, Iqbal Saab, I want you to ask this, some sort of question from Binaksha Mohammadi. Yeah. Bin Hamdi, why do you not speak louder while sir asks questions you? I speak louder, but I today I sick because of this. I can speak louder. Okay, but I am But sick. Yes, exactly. Now, आप इसमें देख सकते हैं कि she hasn't used negative, सही है, but it is giving us a sense of negative. But I am ill, सही। तो and another thing is कि यहाँ पर जो है ना ये verb is quite much not playing the role of present simple, सही। However, great. So yes, Binaksha Momidi, now I want you to ask a question from Mala Abasi. Okay, sir. Um, Malabasi, do you like teaching? What about your husband? Is he like teaching? Mhm. I like teaching, but my husband like do some Mhm. management. Okay, good. Malabasi can say it Just like some this, but management. yes, but my husband likes doing management, or but my husband likes management. Say as simple as that. Yes. Thank you very much. Let's move on to the next one. Okay, so we have a video again, listening to the happiness of people. See, let's move on to the link. Let me share the screen. Okay. Okay, so it is one of those listening activities. Say yes, so have an attended here. Hello, lovely English learners. Back again in London. I'm loving it here. It's great.
Can you hear it? Yes. Can you hear the Yes. audio of? Okay. Yes, yes. Okay. Okay. Hello, lovely English learners. Sir, I Back can't. again in London. I'm loving it here. It's great. Yes. Who can't hear it? Yes, sir. I am listening. Okay. So now I'm. Okay. 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 Let me. Hello, lovely English learners. Back again in London. I'm loving it here. It's great. It's a good place to go and interview people. Lots of wonderful people. Yeah, welcome if you haven't seen the channel before. I just go around interviewing people so you can see how native English is really spoken, or any English really. It's all good. So today I'm going to be asking people what makes you happy. So let's get to it. What makes you happy? Art. 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 Okay. Nice. And the sun. There's some points right there. Yeah. What makes you happy? Sweets. Just sweets. Just sweets. No, I'm joking. Like a lot of things, but like if you have to put me on the spot, it would be sweets. Okay, Yeah. I like it. Very good. Anything else? What makes you happy? People, life, Yeah. everything. Being gifted every morning, waking up. You know, just to see, smell, taste, and hear. That's what it is. It's about life, man, and people. Yep. Not everyone is not everyone, but a lot of people. You know, there's people that make your day. Yep. So you know, but that's what makes me happy. I appreciate it. You've No helped to make problem. my day as Thank well. you very much. I appreciate it. What makes you happy? Sunny days for sure in nature. So today, are you happy? Yeah. Very I think my friends make me happy. Oh, did you hear that? Aww. So friends with Brilliant. with sunny days. Of course, yeah. So today, makes you Yeah. happy. Like a little Perfect. pleasure of life. And what kind of art? Paintings, Okay. especially museums, to look around and explore new things. Good. Well, there's lots of that to do in London, isn't there? So What makes me happy? I'd say having food in my belly makes me happy. Having a roof over my head yeah. and a girlfriend, also something that makes me happy. Good. Yeah. Good answers there. Good. Well, thank you very much. I appreciate it. Anything else at all to add about happiness? I think it's extremely important to be happy, and sometimes I think we overlook taking happiness even out of the little things. Definitely. But I yeah. like that. It's quite profound. Thank you. Very nice one. Anything else at all to add about happiness or London? Take care of yourselves. Lovely, I appreciate it. Thank you so much. And yourself, what makes you happy? Gymnastics. Gymnastics? Yes. Amazing. Do you do gymnastics? Yes. Cool. That's awesome. Well, thank you both. I appreciate Thank it. you. It's Aristopoli. I think the sun and music. Sun and music, that's really big. And And good cocktails. and good cocktails, That's yeah. really nice. You can get all those things today, I guess, in one because it's sunny. Yeah, we Yes, do. we're really having it. So Yeah. we were just talking about having good cocktails. Yeah. Awesome. And just a curveball. It's a slightly different question. What makes you happy? That's a really interesting question. Making other people happy. Yeah. For me, yeah. I think. Spending time with people that make me happy and like being able to do something for someone that I care about and like seeing them happy, that makes me happy. Awesome. Peace of mind. Simple as that. If I have equilibrium from the inside, I can project that on the outside. Nice, I like it. That's an interesting one, so that's a good one. Yeah, happiness comes from within. Perfect. Anything else to add about happiness? Last question. Buy vinyls. Bye finals. Vinyls, like the finals you can listen to. Vinyls! Yeah, Buy yeah, vinyls, yeah. sorry. Buy vinyls. Vinyls are so old, I didn't even know what you're talking Yeah, about. no, Of course. it's really Buy nice to be busy with your music, and it makes you a lot happier when you have beautiful finals. So we bought two today, so it's gonna be Nice. I read a lot of books. every. Awesome, that's great. Thank you, Vel. No problem. Okay, so I hope you got a bit of idea of what that video was about, right? Excuse me, sir. What is the finals? Actually, that is going to be my question from you. Yeah. First, let me ask you the question, both of these questions, and then I'll explain. So, my first question for all of you is, starting with you, Binafsha Mohammadi, what sort of art was the girl liking? What sort of art does the girl like? I don't know, sir. Okay, so you didn't notice? Okay, could you tell me, Binafsha Mohammadi, what was actually the video about?
What's make you happy? Exactly. It was about the happiness of the people. So, Iqbal sir, could you tell me what sort of art does the girl like? Uh, Sir, painting, music. Exactly, painting, music. Thank you. And could you tell me, Iqbal sir, what is a vinyl that the couple was talking about? Sorry, sir, I also don't Oh, understand. okay, it's okay. Yes, sir, That Malabasi, was the what? last words Yeah, which were yeah, uttered by the couples, but I yeah, have exactly. no idea. Yeah. Okay. So, Malabasi, could you tell us about what was? Did you see the video, Malabasi, completely? Yes, Malabasi. Okay, I think she cannot hear us. So, yeah, she has a network connection issue. So, yes, the girl was talking about paintings and music. That was the sort of art that the girl was liking. And about vinyl, you can see the picture right here, right? The green picture. Can you see it? ये तस्वीर आप लोगों को नजर आ रही है? Yes, yes. तो वायनल क्या होते थे आप लोग को याद भी होगा आप लोगों ने देखा होगा और इकबाल साहब आपने मे भी हो सकता है मे भी यूज किया हो या आपके जो वालिद थे उन्होंने शायद यूज किया हो आप लोग को याद होगा ना कि हमारे पास एक म्यूजिक बॉक्स होता था पुराने जमानों में जिसपे एक ऊपर ये ऐसे एक स्पीकर सा लगा होता था और उसमें हम बड़ी सी सीडी डाला करते थे लेट मी शो यू द Okay, पिक्चर yes, yes, yes. या At, यस at the usually used Mela वगैरह. Yes, exactly let yes, me show you Mela. the picture to be more Yeah, specific We yeah. can see in the film, sir. let me show you the picture Yes, sir. ये old songs जो local songs होते हैं ना उसमें sort of exactly and festivals etc. यस एग्जैक्टली फेस्टिवल्स में जि- या लोग के घरों में जिन्हें दिस जिन्हें थिंग हम लोग फनकार कहते थे ना जैसे हमारे यहाँ पंजाब में था जी आलम जी लोहार इस तरह हाँ की हाँ म्यूजिक एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली तो ये द थिंग राइट है तो द नेशनल मोहम्मदी ये दीज आर वाइनल्स आपने भी ओके देखी होंगी ये वीडियोस वगैरह में तो ये जो है ना ये दे वर टॉकिंग अबाउट दिस तो बंदा उनसे यही पूछ रहा था कि वाइनल्स वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि वाइनल्स क्या होता है क्योंकि यूज ही नहीं करता ना कोई और मॉडर्न डे में टू हैव समथिंग लाइक दिस इज क्वाइट प्रेशियस मुझे खुद भी इसी तरह यूनिक किस्म की चीजें रखने का बहुत ही ज्यादा शौक है म्यूजिक सो इंस्ट्रूमेंट ना सर एग्जैक्टली इट्स म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो मतलब आजकल के तो हमारे पास फोन्स हो गए उसमें गाने सुनते हैं पुराने जमाने में इन्हीं में ही सॉन्ग सुना करते थे लोग यस यस तवा ओके इसको कहते थे सर जी तवा तवा पंजाबी में इसको कहते थे तवा हाँ एग्जैक्टली तवा कहा करते थे बिल्कुल ओके सो इट इज द बिट ऑफ सिंपल एक्टिविटी ये वही एक्टिविटी एक्सेप्ट यू हैव टू जॉइन दीज वर्ड्स सही जिस तरह के वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस पहले में देखें इन द फर्स्ट बॉक्स वी आर गिवन द नेम्स हमें जो है ना नाम बताए गए हैं सारे के सारे यस ओके सो वी आर गिवन नेम्स पहले में नाम बताए गए हैं पहली की लिस्ट में इन द सेकंड लिस्ट वी आर टोल्ड बस कि ये जो नाम है बस को ज्यादा यूज करते हैं एवरीडे मंडे थर्सडे हमेशा यूज करते हैं कितना यूज करते हैं सही या मोटर बाइक हो गई या ट्रेन कि इन तीनों में से कौन सी चीज को ज्यादा कौन सा बंदा प्रेफर करता है एंड द सेकंड लास्ट बॉक्स वी आर टोल्ड अबाउट द फ्रेंड्स कि ये किन के साथ ये लोग जाते हैं और द लास्ट वन इज ऑल्सो थर्ड व्हीलर ये भी जो है ना इट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिसको रक्षा किस्म की चीज होती है फॉर अस इट इज थ्री व्हीलर हमारे लिए रक्षा हो गया ऐसे ही रिक्शा जो होते हैं ना तीन पहिए होते हैं so it is something like this so what do you have to do now look at the first sentence in the first box Ali फिर उसके लिए मोटर बाइक में often लिखा गया है and then on the three wheelers sometimes so इन्होंने then you have to join the sentence like this Ali often goes to work ये goes to work on motor सही है on motor bike तो यहाँ तक आपने क्या करना है कि you have to make a sentence on your own कि goes to work you have to put the subject on sorry the verb on your own खुद से आपने कोई सा भी verb add कर लेना है and after that you will have to either use but or while but या while he sometimes now again यहाँ पर क्या था sometimes आ गया he sometimes travels by three wheeler three wheeler के लिए sometimes लिखा था तो मतलब ये है कि you have to use sometimes the word sometimes for three wheeler सही है तो वो क्या कहते हैं कभी कभी थ्री व्हीलर्स में भी चलते हैं रिक्शे में भी जाते हो सही so same is like this Kamal always
go to school, Kamal's go to school always on bus, सही, but never on train or three wheeler, अच्छा, but never on train, सही, क्योंकि ट्रेन के नीचे व्हीलर लिखा, सॉरी, never लिखा हुआ है ना. I hope you got the idea. Yes, Iqbal sir, did you get the idea कि किस तरह करनी है activity? Yes, sir. Yes, Binafsha Mohammadi, did you get it? Oh, I think I get it. Okay. So इसमें से, अच्छा, इसमें से आपने क्या करना है, just take any two sentences, any two words, इकबाल साहब, और उसके आपने sentence बनाने हैं, सही है? Any two words and make sentence out of it. Okay, sir. Yes. Kamal goes always. Kamal always goes to always Hmm. goes on train on motorbike, Okay. but For never train. yeah, but never on train. Okay. For Kamal, you have to use always bus. Okay. देखिए ये बस की कैटेगरी में always का word लिखा है ना इकबाल साहब. तो आपने Okay. Kamal always uses bus. Right? Okay. Yes. Make one more sentence. Naveen Mm-hmm. always Yes. ride on bus, Mm-hmm. usually on three-wheeler. Motorbike. Okay, but this one is like this. Naveed usually goes on bike with her friend every day. Say, Okay. I know it's Okay. a bit of confusing exercise. Yeah. Do you want to try it one more time, Iqbal sir? Yes, sir. Okay, yeah. Mm, Bilal Mm-hmm. Bilal travels on train twice in a month. Good, yeah. Uh, but mm, uh, sorry, Bilal travels on train twice in a month, Mm-hmm. while normally on three-wheeler. While, yeah, but normally good. Okay. Now, Benafsha Mohammadi, could you make two sentences? Okay, sir. She Mm-hmm. doesn't goes to work on motorbike and train. Okay. She You have to use it like this, Benafsha. She goes to work every Monday and Thursday on bus. देखिए ऊपर बस लिखा है, फिर बस की कैटेगरी में मंडे और थर्सडे शी के सामने लिखा है ना, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है. बट शी डज नॉट गो विद अ फ्रेंड, या शी डजंट गो विद अ फ्रेंड, सही, जस्ट लाइक दिस. One more sentence, yes. okay, sir. Mhm. We always goes 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 at go to work goes to work with bus. Okay, we always We go to, okay, sorry to interrupt, Benafsha Mohammadi. We always go to work, सही, क्योंकि we जो है ना वो plural है, so we always go to work on bus, yes. okay, sir. Mhm. We always go to work in bus. In bus, yes, in bus भी ठीक है, good. We never go at work with motorbike. On motorbike, सही. On motorbike. Okay, good, thank you very much. Now, okay, so it is also, इसमें क्या करना है आप लोगों को, in the first sentence, in the first table you are giving situations, और उसके बाद when लगा के आपने खुद से कोई और चीज ऐड करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज चैट विद माई फ्रेंड्स व्हेन आई एम फ्री, कि मैं हमेशा अपने दोस्तों से बात करता हूँ, चैट करता हूँ, फोन पे बात करता हूँ. फिर आगे क्या है, व्हेन आई एम फ्री, जब मैं फ्री होता हूँ, सही.
She travels when she is on vacation. वो हमेशा ट्रेवल करती है जब क्या होती है, जब वो वेकेशन पे होती है। सही। सो इसमें क्या है कि you in the next part, in the when part, आपने इसमें you have to either use is, am or are। उसके बाद क्या है, simply based form of verb। सही। They learn English when they go to class। सही है कि वो इंग्लिश सीखते हैं जब वो क्या है, क्लास जाते हैं। I drink water when I am angry। कि जब मैं गुस्से में होता हूँ मैं पानी पीता हूँ। सही। So yes, Iqbal साहब, Yes, sir. could you give us two sentences? I always go to my farm when I get free from home. Okay. And one more She sentence. Yes, Yeah. she always quarrel with his neighbors when they tease her. Okay, good, good. Yes, Binaksha Mohammadi. I hugged my mother when I was sick. Yes, could you repeat yourself again? I hugged my mother when I said, Oh, you really क्या मतलब मैं समझा नहीं, I didn't get you. मैं अपनी मॉम को hug sir. Okay, hug. Okay, got it. Yes, I hug my mother when I am sick. Good, good. Could you give me one more sentence? I show my father the cups when Yes. I show Yes, go on. I show my homework when I complete it. Good. I show my homework to my friends, to my teacher when I complete it. Good. Right. So, yes. So this is some of the fluency activity. You'll have to read it out, and then I'll help you out in fluency. So yes, Binaksha Mohammadi, kindly give it a read. Read it, sir. Yes, you will have to read it. आपने read करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा if you're mispronouncing any word, or you can pronounce it even better. Sarah's morning routine or Sarah's morning routine. Okay, Sarah's morning routine. Every morning, Sarah wakes up before sunrise and scratches on her yoga mat. She then brews a pot of green tea and enjoy it on the balcony. Listening to the birds chirping. After a quick shower, Sarah prepare a healthy breakfast. Okay, breakfast, healthy breakfast. Okay, usually oatmeal with berries and nuts. Yes. She leaves for work by
7 7:30 a.m. Checking catching the train. What always arrive Arrives rise prices on time. precisely on time. Precisely on time. Good. Okay, good. Yes. And this word here is breakfast. Okay. Yes, Iqbal sir. Yes, sir. Mm-hmm. Every morning, Sarah wakes up before sunrise and stretches on her yoga mat. Mm-hmm. She then brews a pot of green tea and enjoys it to the balcony, Okay, on the balcony. on the balcony, yeah. balcony, yes. Listening to the birds chirping. After a quick shower, Sarah prepares a healthy breakfast, usually oatmeal with berries and nuts. Mm-hmm. She leaves for work by 7:30 a.m., catching the train that always arrives precisely on time. Okay, good. And this word here is a morning. Okay, and she brews and birds chirping. Okay, Okay. yeah, the rest was great. Yes. Okay, let's move on to the next one. Okay, the usual activity. रूटीन मीनाक्षी मोहम्मदी रूटीन इसको कहते हैं कि कोई भी काम जब आप नॉर्मली करते हैं डेली बेसिस पे सही है Regularly. और यस एग्जैक्टली दैट्स कॉल्ड रूटीन फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर ऑल ऑफ इट इन द पिक्चर इज रूटीन कि सुबह सवेरे आप किस टाइम उठती हैं उसके बाद आप नाश्ता करती हैं नाश्ते के बाद आप जॉब वगैरह करती हैं क्या काम करती हैं और फिर उसके बाद क्या करती हैं कि लेट्स से इफ यू आर डूइंग जॉब जॉब के बाद आप घर आके खाना खाती हैं नमाज पढ़ती हैं देन यू वॉच सम सोशल मीडिया फोन यूज करती हैं देन यू स्लीप तो ये क्या है ये आपकी मॉर्निंग रूटीन या डेली रूटीन होती है सही सो दिस इज द रूटीन दिस इज कॉल्ड द रूटीन तो हमारे आई टीचर होप बताते थे रूटीन वो है यस मुझे याद आ गया टीचर कहते थे रूटीन वो होती है जो आपकी आदत बन चुकी हो ओके बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है क्योंकि यस वो जो है ना दैट इज आवर हैबिट वो एक किस्म का हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है हमारी जो रूटीन होती है सही Okay, so now what do you have to do? Okay, usual activity and what's happening now. So इस activity में आप लोगों ने क्या करना है? You will have to use these sentences, the present simple ones, and along with that you will have to use the present continuous या present progressive ones as well. जो आपने मैम अक्षर से पिछली क्लास में सेंटेंसेस सीखी थे वो भी इसमें यूज करने हैं एंड इस क्लास में जो आप लोगों ने सीख लिए आप लोगों ने वो भी यूज करने हैं सही जस्ट लाइक दिस the first sentence is present simple or simple present, and the next sentence is present continuous. So I often watch English movies कि मैं कभी कभार मैं बाज़ औक़ात English movies देखता हूँ but now I'm watching Animal Discovery लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ सही है now we are talking about continuation तो मैं जो है ना Animal Discovery देख रहा हूँ सही कि जानवरों के बारे में मैं देख रहा हूँ My sister never reads book कि मेरी बहन कभी भी किताब नहीं पढ़ती बट शी इज रीडिंग अ नॉवल लेकिन अभी वो क्या कर रही है वो नॉवल पढ़ रही है सो नाउ यू सी के इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम यूजिंग प्रेजेंट सिंपल इवन इन उर्दू कि मेरी बहन कभी किताब नहीं पढ़ती है लेकिन अभी वो नॉवल पढ़ रही है ओके सो फिर सेकंड पार्ट में मैं यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेट्स टेक अनदर एग्जांपल वी डोंट गो ऑन ट्रिप्स कि हम ट्रिप्स पर नहीं जाते सही हम ट्रिप्स पर नहीं जाते हैं बट वी आर प्लानिंग टू गो टू वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू गेल लेकिन हम गेल जाने का सोच रहे हैं हम गेल के लिए एक ट्रिप का सोच रहे हैं तो ये प्लान कर रहे हैं सही सो नाउ इकबाल साहब कुड यू गिव मी टू मोर सेंटेंसेस लाइक दिस बट फर्स्ट Meenakshi Mohammadi you have to ask a question Iqbal, from Iqbal sir then he'll answer accordingly Okay, sir. Um, Iqbal sir, you always lunch with your family? Yes, I always lunch with my family, but nowadays I am busy, so I am doing my lunch at home.
Okay, great, great. Now, Iqbal, you can ask Meenakshi Mohammadi the same questions Okay. like this. Okay. Uh, Banafsha Mohammadi, uh, you like meat to eat in a month? What? I didn't get it. Do you like to eat meat in a month? In a month? Yes. In a month, you meant in a month, right, Iqbal Sahab? Yes. Okay, in a month, Yes, good. yes. I like, and I always, Mhm. not always, but I usually eat meat. Okay, but if somehow you have to use the present continuous as well. आपने is MR के साथ ing जो verb लगता है उस structure का भी use करना है, सही? How, sir? देखिए इकबाल साहब, what was your question? Yes. Uh, do you play football nowadays? Okay, now इकबाल साहब ने पूछा ना कि do you play football nowadays? Let's say कि मैं इसका आंसर करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि I do not play football nowadays, but I am thinking of playing cricket now. सही? तो मैं फुटबॉल तो नहीं खेलता आजकल, लेकिन मैं क्रिकेट खेलने का सोच रहा हूँ. सही है? So the first sentence I used present simple, while in the next one I was using present continuous. सही है? Okay, yes, Binaksha, make a sentence. Uh, I I I often watch Bollywood movies, but now I'm watching Hollywood movies Okay, in so these days. okay, but could you make another example, one of your own? How, sir? मतलब खुद In से my आप own? एक यस खुद से आप एग्जांपल बनाए अपनी. Yes. Um, I'm I often morning exercise, but Okay, I often do, yeah, I often take morning exercise, yes. I often take morning exercise, but now I try to learn dance as well. Okay, but I am learning dance also. सही? Yeah, I am also learning dance. सही, क्योंकि आपने सेकंड में ing का स्ट्रक्चर यूज करना होता है. Okay. And this here is the activity, role play activity, सही है? But this activity actually needs three people. So we do not have three people, so I will be taking part as a third person. तो आपने क्या करना है कि you go to a restaurant with your friend and order a food of your choice from the waiter. तो आपने इसमें जो है ना वो करना है कि दो फ्रेंड्स हैं और वो लोग रेस्टोरेंट में आए होते हैं एंड दे ऑर्डर द फूड फ्रॉम द वेटर. तो वो वेटर जो है ना, वेटर उनके पास लिस्ट लेकर आता है और वो ऑर्डर करते हैं फूड. सही? While waiting for the food, you discuss different types of food, drinks and beverages. तो आप दोनों फ्रेंड जो है ना आपस में फिर क्या डिस्कस करते हैं जब वेटर आपके लिए खाना ला रहा होता है, तो उसमें आप लोग जो है ना डिस्कस करते हैं. यू डिस्कस योर फूड्स. व्हाट डू यू लाइक? आई लाइक दिस. What sort of dish do you like, or what sort of beverage do you like? I like cold drinks, I like coffee, I like tea. Okay. Then the waiter brings you food and you discuss the food with the waiter after eating it. तो जब वेटर आपके लिए खाना ले आता है, खाना खाने के बाद आप क्या करते हैं? यू डिस्कस इट विद द वेटर. आप बताते हैं कि किस किस्म का जायका है इसका. सही? सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटीज. So you two will be the friends and I will play the role of a waiter for you. Okay? Yes, let's start. So Iqbal sir, let's go with you first. But let's keep it short, okay? Because we are also short on time. Yes, Iqbal sir.
Iqbal Sahab, Benafsha Mohammadi, both of you are friends and you will have to discuss with each other. You try to make discussion more with each other. Yeah. Okay, let me unmute you. Sorry, I didn't see it. Yes, Iqbal Sahab. Sorry. Uh, Uh-huh. Ben, Banafsha Mohammadi, what do you like to eat? I like eat biryani. And what drink would you like? Fanta. Would you like to take drink along with the meal or after the meal? What? Would you like to take drink along the meal or after taking meal? After taking meat. Okay, okay. And Okay, what okay, kind? Okay, okay. yeah, okay. So, what would you like to eat? Yes, Mr. Iqbal Sahab and Mr. Benafsha Mohammadi. Sir, yes, sir. We have decided to eat chicken kadai. Okay, chicken fry. But we do not have it right here on the menu. So, would you like to take any alternative? Yes, uh, Mhm. yes. Chicken achar. Okay, chicken achar, that's great. And something else with chicken achar? Any beverage, any drinks? Russian salad. Russian salad. And Benafsha Mohammadi, what would you like to eat? You have a pulao. Yes, yes, I can hear you. Yeah. Sir, you have a pulao. Okay, pulao, pulao. Okay, great. And what else would you like to eat? I think this much. Okay, great. So, okay, I'll prepare the food in a minute, while you can just look around at the menu if you want to order something else. So now you're supposed to discuss the food with each other, okay? Okay, okay. Yeah. Banafsha Mohammed, have you already visited this restaurant? What? I can't Have hear you you. already visited this restaurant and what kind of food here is served? Its quality or taste? Actually, I I'm coming at the first time in this restaurant. Okay. I also I have come don't here know. first time. I don't know about the quality. Okay, okay, okay. But apparently the sitting arrangements and the waiter had come with its style, and it seems that there is food standards are maintained, and there is quality food served here. Vinapsha Mohammed, you have to take much part as well. Yeah. Sir, I didn't get it. What said equal? You मतलब खुद से भी up, you have to just make the conversation. सही है? Yes, okay. So now the waiter comes. So here, sir, here is your chicken achar and here's your pulao. And kindly after eating it, you may also give us your reviews. If you don't like anything, we'll accept that as a pleasure. And if you like anything else, it will be our pleasure to serve you with even more. Okay. So if there's anything else, you can simply order that. So yeah, so now after you have, let's say you have eaten it, so now you're going to give me, both of you are going to individually give me your reviews. So yes, Iqbal Sahab, how did you find the food? Sir, mashallah, Zabardast, excellent. Your food taste was very impressive and very delicious. Thank you. And the most important thing on your part that your serving is also excellent, and I give you full marks. Okay, thank you very much. I really appreciate it. And yes, Binafsha Mohammadi, what do you say of that? Did you like the food? Yes, it was good, but the pulao is very oily. Okay, so we'll try to not put too much of oil the next time. And Okay, thank you. is there anything else both of you would like to add?
Yes. Is there anything else you would like to say or recommend us? No. Okay. And Iqbal Sab, you? Oh, yes, excellent. Everything is okay, but we further come here and we also invite our friends for parties here as well. Okay, great. And more than I'll appreciate more than more than Thank, most. thank Okay. Okay. Thank you very much. Let's move on to the final slide. Okay. So this is a simple question. Okay, so I'll ask both of you, or you can actually ask these questions from each other. So Iqbal Sab, you have to ask this question from Binaksha Mohammadi, and after okay, that, she'll ask the same question from you. Okay? okay. What do you do at Wednesday, Nafsha Mohammed? At weekends, sorry. What do you do at weekends? Um, I often mm, go to morning exercise and play volleyball with my friends and Mhm. clean the house. Okay. What do you do at weekend, Mr. Iqbal? Uh, I try to utilize maximum time with my family, my children, and my father and brothers as well. Mhm. Okay. Now go to the next question. Kindly make it as quick as possible. How do you Very good. spend your free time? Uh, I'm watching English serials and use my phone. Okay. Mhm. Okay. Good. Yes. How do you spend your free time, Mr. Uh, Iqbal? in in free time, I usually use in the social media on my phone. Good. Okay. Ask one more question. Okay, both of you. Just ask one more Where question. where do you like to go on holiday? I like Mhm. I like to go to park and Okay, the next you can say it like this. Okay, I like to go to park. I like to go to park and Yes, so you can ask any of the remaining questions from Iqbal sir. okay, sir. Mhm. Where does your father work? My father is a retired teacher, and he is nowadays you his hobby of gardening. Okay, great. Thank you very much, both of you, for taking part in this activity as well. Let's move on. Okay, so this is your homework. अभी किस तरह करना है आप लोगों ने ये भी उसी जो हमारी जो टेबल वाली एक्टिविटी थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो उसी तरह ही करनी है आप लोगों ने सही Right, right. But while doing so, आप लोगों ने क्या करना है? You'll have to, as usual, make a video out of yourself, and you have to say it. But इसमें क्या है कि इसमें आप लोगों ने, as the title says, pronunciation, इसमें आप लोगों ने थोड़ा pronunciation पे, sorry, थोड़ा pronunciation पे आप लोगों ने focus करना है, सही? इसमें जितने भी words दिए गए हैं और इसके लिए मैं थोड़ा सा ये भी recommend करूंगा आप लोगों को कि आप लोग क्या करें ये वर्ड देखें इनकी जो वर्ड आपको मुश्किल लगते हैं या जो वर्ड आपको लगता है कि इनकी कोई थोड़ी सी चेंज प्रोनाउंसिएशन होगी उनको जरा उस पर भी सर्च करें इंटरनेट पे सर्च करें सही क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिस तरह के दिस वन हेयर देयर स्टार्ट्स विद एम आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस इट ये मैं आप लोग के लिए छोड़ूं ये वर्ड हो गया है ये वर्ड जितने भी फूड आइटम्स हैं इसमें ये डिशेस के नेम हैं उसके ये स्पोर्ट्स के नेम हैं तो ये आप लोगों ने यू विल हैव टू सर्च इट ऑन द इंटरनेट एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोनाउंसिएशन कि किस तरह प्रोनाउंस होते हैं तो उसके बाद आप लोगों ने फिर करना यू हैव टू मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट आपने कोई खुद की वीडियो बनानी है एंड यू हैव टू से द सेंटेंस सो एक एग्जांपल आप लोग के लिए ऑलरेडी यहाँ गिवन है
नेम में क्या है, अली है, फेवरेट फूड बिरयानी, फेवरेट ड्रिंक इज टी। तो अली लाइक्स बिरयानी एंड टी। अगेन फिर बीच में बट लिखा हुआ है, सही है। बट के बाद आप लोगों ने यू हैव टू यूज नेगेटिव वन, कि बट ही डजंट प्ले वीडियो गेम्स, सही। कि वो जो है ना उसको वीडियो गेम्स नहीं पसंद। अच्छा, इसके साथ फिर आप एक और जुमला भी ऐड कर सकते हैं, अदर्स वन के जो जुमले हैं या तो ये ऐड कर सकते हैं, अदर्स टू के जो जुमले हैं ये ऐड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे शी लिखा है, इट इज एक्चुअली ही लव स्पोर्ट्स। अब देखिए यहाँ लव स्पोर्ट्स है ना, तो आपने लिखना है कि ही लव स्पोर्ट्स, मतलब कि फर्दर एक और टेंस ऐड करना है, सही। कि अली लाइक्स बिरयानी एंड टी, बट ही डजंट प्ले वीडियो गेम्स, ही लव स्पोर्ट्स। समझ आ गई आप लोग एक्टिविटी की? यस। माला बनफ्शा मोहम्मदी, समझ आ गई है आपको? Uh, जी सर। ओके, सो इसके साथ जो है ना, वी वाइंड अप आवर क्लास एंड सरफात, इफ देयर इज एनीथिंग यू लाइक टू ऐड? यस सरफात। चलिए जी, आफ्टर द रिकॉर्डिंग इज डन विल सेंड इट इन द ग्रुप, और मैं ये ग्रुप में भी एक मैसेज रिलीव कर दूंगा, सही है। सो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, आप जो है ना स्टे इन टच विद मी, आई विल हेल्प यू आउट एट ईच एंड एवरी सर मोमेंट। काइंडली सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, या लास्ट एक्टिविटी मैं कर रहा था उसमें ना वो रजिस्ट्रेशन मांग रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन मुझे ईद के बाद पता नहीं वो किन्होंने मैं लिखी थी, मुझे भूल गई है। वो तो काइंडली मुझे सेंड कर दीजिए अच्छा, रजिस्ट्रेशन। वो आप ये जो है ना ये रजिस्टर, इसके हवाले से आप जो है ना ये एक सरफाज जो है उनसे आप जरा डिस्कस ओके करें, ओ सही, क्योंकि ओके, मैं या मैसेज ये कर उनका दूंगा। एरिया। ठीक ठीक, ओके, थैंक थैंक यू थैंक वेरी मच। थैंक चलिए जी, लेट्स एंड द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, have a nice time. हैव अ नाइस टाइम।